श्री अकाल, राम राम, नमस्ते, अस्सलाम। मैं आपका होस्ट यासिन नदा और आप देख रहे हैं जे टू चैनल। बहुत अरसे के बाद हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, द रियल सिंध, और आज हम पार्ट 1 जाट कंट्री डिस्कस करेंगे। इस सीरीज का जो फर्स्ट हमारा प्रोग्राम है, तो इस पे डिस्कशन करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अजय सिंह गाटवाला साहब ने, यूएस से। थैंक यू वेरी मच अजय भाई, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और इस पे हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच आपका और आपके टाइम का। You are welcome, Ahsan. Long time we haven't spoken, so good to reconnect with you. इस जो आज का हमारा प्रोग्राम है, हम इसके ऊपर बेसिकली 5 कंटेंट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो कंटेंट है, अजय भाई, जो सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप ऑक्सस और रिवर इंडस के कनेक्शंस को कैसे जोड़ते हैं और जाटों के साथ इसका कैसे कनेक्शन मिलता है? ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने ये जो पहली स्लाइड लगाई है, ये ऑथेंटिक ब्यूटीफुल फोर्ट जो कल्होरो जाट रूलर्स का है, ये बहुत ही अच्छा लगा है। उसकी जो पक्का किला और कच्चा किला, बोथ और ब्यूटीफुली कैप्चर्ड बाय यू, तो हैट्स टू थैंक यू। यू। थैंक यू। ये जो जो स्टार्ट हम करेंगे, तो जितने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं एंड रीसेंट डीएनए स्टडीज जो मैप कर रही हैं, वो सभी मेजॉरिटी जाटों को ऑक्सस वैली ओरिजिन से कनेक्ट करती हैं, जो कि सरप्राइजिंगली ब्रिटिश एम्पायर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे से लेकर के और हिस्टोरियंस ने उसको मैप किया है। और जाटों का संबंध इस एरिया से इसलिए है, सब सिंधु का एक बड़ा पोर्शन है ये ऑक्सस टू इंडस रिवर। सो जो इनिशियल नोमैडिक ट्राइब्स थी, जिसमें जाट भी आते हैं, जब एवरीबडी वाज जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव ऑन फूड, कि खाना मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। सो दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ऑक्सस towards Indus and colonize the whole of the landscape of the Indus. And the Indus we are talking about in not the today's Sindh of Pakistan. Sorry, it is the Indus or Sindh civilization जिसको कहते हैं. It is the whole of the East Iran, Afghanistan, Upper Kashmir, and towards towards Delhi. That includes Rajasthan, Haryana, and whole of Punjab. So the relationship between these two is intermittent. It has been ruled, controlled, and everything like civilization, language, everything was given by the Jats. So this is a one fantastic write-up which you are seeing right now. And if anybody has questions in that, they can definitely uh, ask you. And it is verified by not one, but at least 10 old historians who are like geographic person who traveled, including Pliny, General Cunningham, Ptolemy, Strabo, Trump, not this Trump, but the great historian Trump. So they have defined it nicely. Look at the one which they defined almost 200 years back. They have captured Abiria, which was Abru, which is now in Sindhi called Abru, but they are Abar Jats. They have defined it nicely. Read the line. The term Jat is only their tribal name, the general name of their horde. यानी कि जो जो उस जमाने के होड्स थे, उनको अबर कहा जाता था, उसी से अबरू अबर जाट्स है। सो इसीलिए एक एक एक्सट्रीम इंटर रिलेशनशिप है। बट इफ यू पिक अप अ मैप, दिस द लाइन फ्रॉम ऑक्सस व्हिच इज कैस्पियन टुवर्ड्स द इंडस, इट हैज all dominated, ruled by the Jats, and started basically civilization started by them. तो ये जो अबर है, मैं आपको इसमें थोड़ी सी चीजें ऐड कर दूं कि अबड़ो क्लैन सिंध में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये अबड़ो क्लैन, ये वही क्लैन है जिसका अभी आप कह रहे हैं कि इसको अबर कहा जाता था। और ये मातली डिस्ट्रिक्ट, मातली सिंध का एक डिस्ट्रिक्ट है मातली, वहां पे इनका नेटिव बेल्ट है बदीन। ये अबड़ो क्लैन वहां बैठा हुआ है, तो वहां नहीं पे बॉस, इनकी एग्जिस्टेंस है। आप उसमें देखिए, subsequently the main body of the Iyati, this means the Jats, seem to have occupied the district of Abiria and the towns of uh, Parda Batra and Bardeksama in the Sindh. So these are like recorded by
these historians who are like ancient. And it's not that anybody can creative or mythically. These are non-Jats. Jats were not even interested in any historical thing, but they have captured it nicely. So it is it well connected. The Jats have been living among the old time. Water has been developed over a period of time in a certain way. Drainage system were there, but the main food supply line has through the rivers. So all the rivers, all the great fertile belts have been under control of the Jats. आप अगर और स्लाइड भी देखेंगे ये इसीलिए मैंने I have almost like 37 proofs, 38 proofs of this by various historians on a certain period of time. Not like it's a one slide you put it there and one person is saying no. You can scroll down and you can verify that I just provided due to the timeline these short screenshots for anybody to read and ask questions. So it's fantastically written. अच्छा, दूसरा अजय भाई एक क्वेश्चन ये भी है कि जो जो जाट हैं मतलब बेसिकली जो इनिशियल इस लैंड को आबाद करने वाले या जो लैंड ओनर्स थे वो जाट ही थे और yes because every proof you read it is there the lord of the land and the rulers of the land rahe har record mein even if the historian try to like remove them from the history, but as the fact remains it's still being by few places left around. Few of the new historians being biased against Jats, they try to like dilute it, move it towards some story. For example, I was in a discussion, some lady from Britain, the idea was of discussion was about Sindh. So my statement from the historical record was, hey, Sumrus were the Jats. And she was like, her name was Janine Gresh, and we have almost like 2 hour discussion. And ultimately I proved her, she was trying to portray everything under Sindh. Oh, they are Sindhis. I said, I'm not disputing they are not Sindh. Sindh is a geographical area. So the person living in there, everybody is Sindh. But who are the one which are the Jats? So I just gave her at least 40 proofs for last even 1947, before like 200 years of the British effort. And they did a fantastic groundwork by speaking to the people and recording them. They may be outsiders and they are totally unbiased. They may have some errors because some people tell lies at that time also, including when Colonel Todd was doing some work in Rajputana. He himself doubted everything what has been told to him, and he has recorded in his book. But that is around 1824. But we have records around 1850, 1700s. So these people have recorded everything nicely. So this is a brief snapshot of what the Jats are from the geographical area, and the places which I mentioned, they are still existing in that particular area. यानी कि जो अमू दरिया यानी ऑक्सिस से लेके जो पूरा जो इंडस है यहाँ पे जाट ही बैठे हुए थे और इन्हीं लोगों ने इस पूरे एरिया को आबाद किया और यही यहाँ के लैंड ओनर्स थे एक्चुअली. Yes, they were the rulers. They developed the society. They developed the language, even which I think we did the initial interview on, like Mudassar did on that Jatki language. There are so many variants of that. Different locations, we have different own languages. So we gave the languages which people like, even like the Trump said it very nicely. TRUMPP, the historian, he said, hey, Sindhi. The Sanskrit is just nothing but a pure Sindhi language is the rules. So just like Punjabi is now, it's just a language, but it is again a Jatki language. So this is how we provide everything, the base for the civilization. लेकिन हमने एक्चुअली जो रीजनल आइडेंटिटीज थी उनको अपने ऊपर हैवी कर लिया और जो हमारी एक्चुअल आइडेंटिटीज थी उसको हमने हाइड कर दिया. जैसे कि फॉर एग्जांपल आज अगर आप पंजाबी को लैंग्वेज को पंजाबी कहेंगे उसका ओरिजिनल नेम कोई भी नहीं जानता. इसी तरह ये तो डायलेक्ट थे, चाहे सिंधी हो गई चाहे पंजाबी हो गई, तो हमने इनकी आड़ लेके अपने ऊपर हावी कर ली और जो हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटीज थी हमने उसको वहां से हाइड कर दिया. यस और दूसरी बात ये है कि पंजाब तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था यार. पंजाब तो ये तो मुगल टाइम का एक वर्ड यूज है जस्ट टू लाइक अ ज्योग्राफिकल टेरिटोरियल. लाइक India also has created a lot of states nowadays because of the population increase.
They divided, for example, the old Punjab has been divided into 6 7 small things, like East Indian Punjab. Then there are two more states. They taken land from Kashmir, Jammu. They've given some lands to those guys. So that's हम्म, how the whole structure has been done. यही एक चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की है, कि हम्म, उस जमीन को डिवाइड किया गया है जानबूझकर, जिससे कि रूलिंग हो, और वो फिर नाम स्टक हो गया. And that's how the, because just before Punjab it is used to be Upper Sindh and Lower Sindh, nothing more. हम्म, It was Sindh. So if you, let's say, if you jump to the slide number 4, see here also it's these guys are defining the shores of the Caspian. These are great historians. They are the geographers. They are extremely traveled people on those times. Dahya, they mentioned the Dahya, like the Tomrish हम्म, Dahya, who was challenger to the Cyrus third. हम्म, She was recorded by everybody. I think we can do a great video on her. She was a great fighter, and she cut the head of Cyrus third, and everybody in Iran knows about it because of the cheating by Cyrus. So there it is. They are mentioned about very clearly. Just slide down to even slide number 5. Again, it is in the different, like different language, but it translate everything to the one which we are just talking about. हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि महाभारत सिंध और जुदरल जाट को आप जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं? भाई इनका जो कनेक्शंस क्या था जो आपस में? हाँ, सो एक इंडिया में एक डॉक्टर शशि प्रभा गुप्ता है. शी डिड अ फैंटास्टिक वर्क ऑन द ethnical differences, and like a fantastic work among the uh, the Jats and Rajputs. She did some story on that, but later on she developed a very good book, and she mapped everything from the Mahabharata time, the tribes who were known tribes and the unknown tribes. And I have a list of known and unknown tribes both, and 99% of them were Jats. Even today, they have the same mapping. So Mahabharata is just a war. It's a family dispute. It has nothing to do with anything Kaurav Pandavas. They are still Kurus, and the language is called Kaurvi. And in Western UP, a lot of people say, "Hey, you have a Kaurvi language in that Braj area." So we are like not one. At least a lot of historians mapped it back, Jats, to the Mahabharata time, and the tribes who participated in that war, and a lot of chiefs and their further generations are still existing. So it's a great relationship. And Mahabharata, like Duryodhana, Dushala, Jadrat, they were mentioned. And the Bharat dynasty, when it's about to end, the whole of that, the current Sindh area has been handed over towards to the ruler who we call and recorded in the history as Judra. And that is something which is very unique. And the different stories has been created, like, hey, the Jats and the maids were fighting, and they're no learned person, as the Brahmin said it. They sent 30,000 Brahmin, 80,000 Brahmin, different locations says 80,000 Brahmin. But these Brahmins were in job. Majority of them were the clerks or chamberlain, or just the basic admin people who have been hired because they're looking for a job to run the administration of the Sindh province. And that अच्छा started भैया, that started that started with Jadrat. So different people have created their own mythical story, but in the real world, this area has been dominated, ruled, controlled by Jats only. अच्छा अजय भाई, मुझे ये बताएं कि जो जुदरद जाट था, ये इसने कितने इयर्स तक सिंध के ऊपर रूल किया और इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी वाइफ की हिस्ट्री क्या है और ये किस क्लैन का था? भाई मेजॉरिटी जो जो अभी तक मेरे पास रिकॉर्ड मिल पाए हैं, उसमें आपने मुझे अभी 3 सवाल पूछे हैं. बट इससे पहले मैं आपको 2 स्टेप पीछे ले जाना चाहता हूँ, कि ये डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट स्टोरी पेली हुई है, और जबरदस्ती उसके अंदर कि वो 30,000 ब्राह्मण भेजे कि जाट और मेड आपस में ना लड़ाई करें, और वहाँ पीस बनी रहे. लेकिन अगर आप देखें तो उस जमाने में तो सीधा सीधा बौद्धिज्म के टाइम तक की स्टोरी को ये 30,000 ब्राह्मण में घुसाते हैं.
सो बेसिकली जो जो कहानी है वो ये है कि देवर प्योरली एम्प्लॉयड बाय देम। और जुद्रत की जितना डीप जाते हैं, ये दुशाला का कजन आता है, यानी दुशाला मतलब जो दुर्योधन की बहन थी, जो कि जयद्रथ, जयद्रथ जो महाभारत में पॉपुलर है, उसकी वाइफ थी। सो उसने 20 साल राज किया उन्होंने, जब भरत डायनेस्टी कोलैप्स हो गई। तो उसके बाद जितना भी टाइमलाइन रहा, मेरे ख्याल से टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ, जिसका कहीं रिकॉर्ड नहीं मिलता, मैंने बहुत कोशिश की है। इसकी दो चीजें नहीं मिल पा रही हैं। एक तो इसकी वाइफ साइड पे नहीं डिटेल मिल पा रहा, और इसने भरत डायनेस्टी कोलैप्स होने के बाद कब तक रूल किया। क्योंकि सीधा उसके बाद हम सीधा सहस्राय तक पहुंच जाते हैं, या और डिफरेंट रूलर्स पे। सो इसका डिटेल नहीं मिला। क्लैन भी इसका नहीं मिल पा रहा है कि इसका क्लैन नेम क्या था। बट जितने भी रिकॉर्ड हैं पिछले, मेरे पास 12 या 15 जितने हैं, उसमें डायरेक्टली इसको रिलेटिव ऑफ दुशाला बोला गया है, और इसीलिए इसको प्रेफरेंस दी गई। बाद की बुक्स में ये देखा गया कि उसको मेड को भी राजा बनाया गया, सम टेरिटरी डिवाइड कर दी। ऐसा कुछ नहीं किया, ही वॉज द सोल किंग। और इसके प्रूफ डायरेक्ट हर जगह पे मिलते हैं कि ही रूल्ड इट पीसफुली फॉर लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड। तो एंड इसकी दैट लोकेशन क्या दैट थी वहां पे रूल करने की, सिंध में किस जगह के ऊपर इसने रूल किया, या कौन सा पूरे पर्टिकुलर पूरे एरिया सिंध, इसके पूरे, पास? हाँ, पूरा सिंध जो मैंने आपको डिफाइन किया अभी, पूरे सिंध की मालिकाना हक, जो बर्थ राइट है, जो लैंड राइट्स थे, सारे सब इसी के पास थे। यानी इसको ये कह सकते हैं कि ये हिस्टोरिकली जो सिंध का जो सबसे बड़ा किंग था, जो हिस्ट्री में गुजरा है, ये जुदरती था। यस। तो इसको, कहानी को किस तरह घुमाया गया डिफरेंट लोगों ने, डिफरेंट के थ्रू। सो बट ये डायरेक्टली इमीडिएटली जैसे ही भरत डायनेस्टी कोलैप्स होती है, उसके बाद से बहुत लंबे पीरियड तक ही वाज द रूलर। आप 8 स्लाइड नंबर 8 पे भी आ जाइए, उसमें भी ये बात लिख रहे हैं। लेकिन आप देखिए किस तरह से मेरे पास कम से कम भी, अभी अगर आप अज्यूम करें कि 40 रिकॉर्ड्स हैं, 40 में से 25 कहते हैं 80,000 ब्राह्मण्स वर एम्प्लॉयड इन द जॉब एज क्लर्क्स, administrators to run the system as an ruling. That has been highly emphasized, except the few books which I just showed it to you. They are writing 30,000, and जो कैपिटल भी उसकी डिफाइंड है। और जो जो फ्यूचर में जो जुदरत ने और जो सहसराय जो उसके डिसेंडेंट रहे हैं, उन्होंने जो कैपिटल बनाई है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट ये स्टिल वेरी क्लियरली डिफाइंड कि दुशाला के टाइम पे जो सिंध की कैपिटल डिफाइन की गई, वो अस्कलान की गई, जो कि आज भी है। सिंध में उसका नाम आप बता सकते हैं जो भी कुछ है, लेकिन वो लोकेशन आज भी है वहीं पे। और वहीं से उसने फर्दर रूल किया, और वहीं से उसने सारा कंट्रोल फैलाया। इसके ऊपर हम जो हिस्टोरिकल नेम्स हैं, ये बहुत सारे चेंज हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जो लोग भी यहाँ पे आए उन्होंने सिटीज के नाम चेंज किए, और आज भी हो रहे हैं। तो इसके ऊपर हम एक सेपरेट प्रोग्राम करेंगे कि जो ओरिजिनल नेम्स थे सिंध के, वो क्या थे और उनके कैपिटल्स क्या क्या थे। हाँ, मैंने वो एक्सेल शीट बनाई है पूरी की पूरी, और मेरे ख्याल से अगर ये उच्च के करीब जाता है थोड़ा बहुत, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, बट फिर भी वी विल डू दैट इंडिपेंडेंटली। वी विल मैप इट बैक एग्जैक्टली व्हाट लोकेशंस एंड व्हाट टाइम एंड व्हेन इट द नेम वाज चेंज्ड। तो इसके अलावा यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली जो जुदरत के जो वाइफ या उसके क्लैन के बारे में हमें अभी तक कोई क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये जो मैट्स की कहानी है, मैट्स और जाट्स और मैट्स की लड़ाई हुई, ये इसमें क्या कंफ्यूजन है, ये क्या बताते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये मैट्स का। ये ये मेड्स गए कहाँ? बिकॉज बहुत सारे अरब राइटर्स ने भी मेड की कहानी लिखी है। अब ये दोनों के बीच की लड़ाई की बात करते हैं। सो एक लड़ाई पावरफुल लोगों में होती है, कुछ कोई ऐसा मैं वो नहीं रखता। तो अब ये कहते हैं भाई, अरब इन्वेडर कहते हैं कि मेड्स फिनिश हो गए, लेकिन अब कुछ लोग जो है जबरदस्ती उसको मोहानास पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोहाना और मेड में बहुत फर्क है। मेरे ख्याल से जो जो मेरा व्यू पॉइंट है, ये सेम ही थे। ये दो इंडिपेंडेंट सेम ही लोग हैं। मांड से लेके जो मांड मांड किंगडम खड़ा हुआ है, वो ये जाटों का ही था। और ये उस पे एक टोटल डिफरेंट, एक सेपरेट मैं आपके साथ वीडियो कर दूंगा हिस्टोरिकली। ये मेड आज गायब है। ये कहाँ गायब है किसी को नहीं पता। कोई ऐसी चीज तो गायब नहीं होती, क्योंकि लास्ट में अरब वालों ने एक स्टोरी क्रिएट की कि भाई दे एम्प्लॉयड मेजोरिटी जाट चीफ टू फिनिश ऑफ मेड्स। क्योंकि जाट मेड की लड़ाई होती रहती, कई बार मेड अप हो जाते थे, कभी जाट मेड हो जाते थे। तो ये अभी तक भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इसका किसी ने कोई स्टडी नहीं किया, बिकॉज पीपल आर जस्ट डूइंग कट एंड पेस्ट, कॉपी कट एंड पेस्ट।
nobody is thinking anything how rational this thing is possible or not. क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आज के जमाने में जाट तो मौजूद है लेकिन मेड्स गायब हो गए, या हाँ, फिर तो ऐसा भी हो सकता है या फिर कि ये मनगढ़ंत लोग थे कि ऐसी कहानी बना दी गई दिखाने के लिए. यू नेवर नो, बिकॉज these historians are, they're the crooks. They can create any story from anywhere. फॉर और एग्जाम्पल, यहाँ तो फिर मैं आपको एक बहुत बड़ी स्टोरी बनाता हूँ जो मैं चैलेंज करता हूँ. जैसे पृथ्वीराज रासो एक बुक है, इंडिया में बहुत पॉपुलर है वो, लेकिन उसको अगर आप पढ़ो, उसको देखो, उसकी लाइन बाय लाइन तो प्योर बोगस है. और वो लिखी भी ऑलमोस्ट व्हाट आप लगा लीजिए 1496 के अंदर लिखी गई है वो. ऑलमोस्ट 500 years later than what actually happened. अब 500 साल के बाद आप आज के दिन में इतने रिकॉर्ड्स मेंटेन हैं, आप 100 साल के बाद ठीक से नहीं बता सकते, तो आज 500 साल पहले तो रिकॉर्ड बताने बड़े मुश्किल थे. तो ये लोग अपनी एक कहानी, मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, उसको एक देते हैं और विदाउट थिंकिंग लॉजिकली उसमें स्टोरी करके मार्केट कर देते हैं. आज की बात करूं तो सेठ दयाराम गिद्दूमल को किस तरह जाना जाता है, वो किस चीज में फेमस हुए और उनकी कौन सी सेइंग है या कौन सी एंडोर्समेंट है जिसमें उनको याद किया जाता है सेठ भाई दयाराम भाई गिद्दूमल को? भाई आपको ये तो पहले आपने ये तीनों स्लाइड जैसे लगा दिए, 8th नंबर भी आपने किए, 9th नंबर भी आप देखें तो उसमें भी हमने जुदरत का मेंशन किया है. आ, ये जो आपके सामने मेंशन है. उसके बाद आते हैं आपकी जो बात कह रहे हैं, गिडुमल. गिडुमल फैमिली बड़ी पॉपुलर है. इनके जो फोर फादर्स थे वो कलहरों के यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे. ये जो सेठ दयाराम गिड्डूमल हैं ये शिकारपुर में थे. शिकारपुर के जो उस वक्त डीएम जो सिंध की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो सिंध की हिस्ट्री लिख रहे थे, उन्होंने उनको क्यूरियसिटी थी क्योंकि वो डिफीट नहीं कर पा रहे थे. सिंध में कोई सक्सेस नहीं था ब्रिटिश एम्पायर का. सो दे वांट टू नो कि ये लोग कौन है जो इतना हैवी रेजिस्टेंस दे रहे हैं इनको, एंड ब्रिटिश आर लूजिंग. So then they contacted these the current generation who was the DM at like district magistrate of that, and he has shown all his original records to this British officer, and this is just a one page which British officer wrote when he has seen those documents which Seth Dayaram Gidumal has shown him, and this is what he has written. So he has written the see from certain indications in the epic poems, my friend Mr. Dayaram. So he's a British officer writing. He was a district judge of Shikarpur. He is saying very clearly, see, note on the language and ethnology of Sindh is inclined to be viewed as the Pandavas may have been the Jats of the hilly tracts of the Punjab. So, because Punjab is already in the existence, which we earlier called Upper Sindh, so he's recording it. So these are the people who's a pretty much cloud, and you currently have Sindh में गिड्डूमल bridges भी हैं काफी, और काफी इनका नाम रहा है. They really did a fantastic job in building up the Kalhoro Empire, and his forefathers were the PM of the Kalhoro first dynasty. So these guys have the original records, and they have defined it very honestly as what about the Jats, who are the even they just move towards the another religion, Sikh regiment and all that, but they have defined it nicely. Exactly, they are true to their salt, which is something a glorification and confirmation that they are honest, they are straightforward. And look at the line below, Dr. Ernest Trump. This is the guy I was talking about. And he's defining very clearly that describes Sindhi as a pure Sanskritical language, more free from foreign elements than any other in the North Indian vernaculars. So this proves everything, that exactly if you go back and look into the Panini, where Panini was sitting around and writing about Sanskrit, it is next to the Sindh area or the current Sindh. He was in the current Afghanistan, but it is like the borderline of that Sindh area. So this proves, even almost like 200 years back, that with the authentic records, these are the original Aryans, original owners, and they are the one who gave language, everything to this place, and built it ground up as a fantastic place to live, and an envy to the world. It is even Prophet Muhammad talk about a lot about Sindh. Well, he used to get a smell of water of the Sindh and everything. So you see, this is all being developed by
Jats over a period of time. यानी कि सेठ दयाराम बिजूमल ने ऑनेस्टली ये बताया कि जो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं ये कौन है, ये हाँ जाट रेस से हैं। हाँ और उन्होंने अपनी राइटिंग से बिल्कुल क्लियरली, विदाउट एनी डाउट, बिल्कुल क्लियरली लिखा कि ये लोग कौन है और इनका ताल्लुक किस रेस के साथ है। यस, एंड इनके पास जो जो अगर आप पूरा उसका रिकॉर्डिंग पढ़े तो इनके पास A to Z, मतलब जब इन्होंने पक्का किले से पहले के सारे इनके पास रिकॉर्ड, ये पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इन्होंने इसको इस ब्रिटिश ऑफिसर को दिखाया जिसने ये बुक लिखी। पक्का किला और कच्चा किला आज भी जो हैदराबाद, अभी रिसेंट नाम इसके हैदराबाद है, पहले तो इसका नाम नेहरू कोर्ट था, वो आज भी वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1947 के बाद जो माइग्रेशन हुई महाजरों की, तो वो गवर्नमेंट ने उनको वहां सेटल किया और बहुत सारी चीजें उनके लोगों की डिस्ट्रॉय हो गई। तो वो ये तो कन्फ्रंट। गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ दोज, बट दोज आर रियली फैंटास्टिक फोर्ट्स। एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू वन, there is a place called Gohad in India. So if you map the original forts of Kalhoros, even the current one, or even the Wilk forts, Sheikhupura, they are exactly the same as what is in Gohad around 1485, built by the Rana Jats of the Cavalier side. So look at the distance, but still the architecture and everything, forts have been the same. And they follow the same system, water treatment, everything is so superb. But sadly, all these muhajirs or the refugees from Bihar, Bengal, Purabiyas we call them, they have been just dumped into that, and they almost destroyed those magnificent forts. They should be protected, as per my suggestion goes, to retain the actual history and glory of Sindh. Glory of Sindh is through those great things which these guys have done. तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक ही रेस के लोगों ने जो फोर्ट कंस्ट्रक्शन थी और उसका जो तरीकाकार था वो हर जगह सेम था, चाहे वो राजस्थान में बना हो फोर्ट, चाहे वो पंजाब, यानी कि जिसको आज का नाम पंजाब है, वैसे कोई अपर सिंध इसको कह लें तो बेहतर होगा, हाँ, यहाँ वहां बना हो या सिंध में बना हो, तो yes, कंस्ट्रक्शन जो थी एक पूरी रेस जो जाट ट्राइब था उसने एक तरह से की, जो आर्यंस थी। yes, exactly. अच्छा, ये जो 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 पुराना कैपिटल है सिंध के, उनके बारे में आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कौन से पुराने कैपिटल्स थे, या भाई यानी कि आप, जो हाँ, तो आप अगर आप रिकॉर्ड देखें तो अस्कलंदा के बाद जो अगले कहीं नाम आता है तो वो आता है कोहियार और खूसदार, और उसके बाद आता है जो कि सिल्क रूट पे था, उसके बाद मुल्तान के क्लोज ये जो सिल्क रूट पे अगली कैपिटल आती है अरोड़ी और अरोड़, जिससे ये लोग खत्री अरोड़ा बिजनेसमैन भी हैं, जस्ट लाइक इंडिया में मारवाड़ वाले बिजनेसमैन मारवाड़ी लिखते हैं, आज के दिन में हरियाणा वाले हरियाणवी लिखते हैं। सो ये दीज गाइज हैव टेकन दैट नेम फ्रॉम देयर, एंड दीज टू both the capitals were built by the Saisrai one. Saisrai one was the Jat ruler. He built the first capital, which was Kohiyar. Even today, the Jats called it Kohiyar, unless the Arabs invaders converted into a garrison and named it Khuzdar. It is a fantastic, superb fort. It is a fantastic valley. It is most beautiful, like in a cup type of a uh, like a the temperature and everything was fantastically recorded. It's very easy, very fantastic to live around. And now, after the Saisrai too moved his capital from Kohiyar towards Arod. Alor, we call it Alor, Arod, or Arori, whatever you call it. But आज that आज those are इसे the, आज इसे कह आज जो इसका नाम है वो रोहड़ी है, रोहड़ी जंक्शन है, जो कि बहुत बड़ा फेमस है रोहड़ी जंक्शन। और ये बिल्कुल पंजाब, यानी कि आज का जो पंजाब जैसे स्टार्ट होता है उससे पहले ये बहुत बड़ा जंक्शन आता है। yes, so it has shifted towards that because अगर आप उसकी geographical location देखें, जो मैं आपको डिटेल दे सकता हूं, तो वो सिल्क रूट पे मैक्सिमम ट्रेड था, and it's tremendous amount of potential. It has been beautifully built. It's still, if you go and look at the ruins, they're superb. So it was built by Saisrai too. So जो कैपिटल की बात आपने कही थी, तो ये मैंने आपको आंसर बता दिए। कोहियार, खूसदार, अलोर, ये रोड़ी सब they're built by Jats. So ये एक बहुत ही stamped paper है, which really kills everybody who talks nonsense. The Jats, see, they are so dumb that they are confusing Jats with the Jat. Jat are the one who take care of the camels of the Jats.
like today's Zardari, your Pakistan person, Zardari. He is a Jat. He is not Jat. So it has been nicely observed even by the British. Almost 80% of them noted a big difference between the Jat and the Jat. So the camel caretaker of the Jat zamidars or Jat camel owners are called Jat. Even their language is different. Even they notice that the language between the Jat and the Jat is totally different. लेकिन इसको इरफान हबीब ने क्या अपनी बुक में कहा है, क्या भी इसके बारे में कुछ कह इरफान सकते हैं? हबीब ने एक नई तरह की थ्योरी चलाई। एक तो ये जाटों का इमिग्रेशन दिखा दिया, माइग्रेशन दिखा दिया। इट इज नॉट माइग्रेशन, इट इज द कॉलोनाइजेशन ऑफ द जाट्स ऑफ द लैंड। इट इज अ कांस्टेंट एक्सपेंडिंग प्रोसेस। इवन इट इज हैपनिंग टुडे स्लोली, बट इट इज हैपनिंग। तो सो क्या इरफान हबीब ने किसी से एंडोर्समेंट ली? क्या आई किसी डोंट नो, क्या मेरे को क्या अभी उसने तक किसी जाट से पूछा कि मैं आपके बारे में ये लिख रहा हूँ, मैं जत्थों को जाट बना रहा हूँ? क्या उसने किसी से एग्रीमेंट किया, किसी जाट से बात की, या उसने जस्ट एक अपने तरफ से ही ये सब कुछ स्टोरी क्रिएट्स कर दी? एक तो उनका बेस है छचनामा, और छचनामे का भी जो लेते हैं वो छचनामे में मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है। कहीं भी जाट को उसमें कंट्रोल नहीं बताया गया है। वो भी एक, अगर आप उसको पढ़ें तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई भी एक स्टेटमेंट ले लेते हैं जैसे आप और मैं डिस्कशन के लिए कि मैं आपको मारूंगा, बट इट हैज टू बी इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अब प्रेमिका अपने प्रेमी से कह रही है, माँ अपने बच्चे से कह रही है, दुश्मन दुश्मन से कह रहा है, पड़ोसी किसी पड़ोसी को कह रहा है। सो इट इज अ सिचुएशनल वन। सो छचनामे को जो हिस्टोरियन आजकल उसको हिस्ट्री मानता है, वो बहुत ही, आई डोंट नो हाउ ही एंटर इनटू द हिस्ट्री एरिया। और ये मैं ओपन चैलेंज है, ये आपके सामने मैंने डॉक्यूमेंट इसीलिए इसको इंक्लूड किया है। मेरे पास और डॉक्यूमेंट है। इट इज बीइंग रिटन एंड कैप्चर्ड फ्रॉम द लैंड टेन्योर्स। और आप पढ़ के देखिए, जमींदारी एंड ऑक्यूपेंट टेनर्स इन अर्ली टाइम्स ओवरलॉर्ड क्लेम्स। ठीक है, बहुत साफ बंदा बोल रहा है। आई हैव स्टेटेड दैट बिफोर द इन्वेजन ऑफ सिंध बाय द अरब्स अंडर मोहम्मद कासिम, क्योंकि उससे पहले 9 से लेकर के 36 जगह से तो दे हैव बीन डिफीटेड। In 713 AD, he was successful in 713 AD, from 712 to 713. The country was occupied and ruled by a tribe of Hindus or Hindu-as clan called themselves Jats. They had their capital at Aror or Alor on the Indus, and it is said that the dominion extended as far as Surat in Mumbai, including Kathiawar country. So do you need any more proof than this? That Lower Sindh, Upper Sindh, all being ruled by the Jats, unless the Chach usurper, the clerk, stole it through deception and destroyed it forever. Even Qasim was there for only for what? 1 year? He could stand there. There are at least 200 years, 250 years of a constant resistance where 4 or 6 caliphs were changed. And I think we can do a separate video on that next one, where we can provide all the proofs. He escaped the wrath of Jats because Jats were lock and loaded, and somebody informed him that Jats are coming after him. He just moved his camp because he knew that if he engaged Jats in that war, he's finished, just like the earlier ones. Earlier Caliph sent a lot of campaign against the Jats, and all of them were लेकिन defeated by that. इरफान हबीब या ऐसे बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, उनको एटलीस्ट किसी से एग्रीमेंट लेना चाहिए, किसी जाट से पहले पूछना चाहिए कि मैं आपके बारे में ये बात लिख रहा हूँ और मैं छचनामा से रेफरेंस ले रहा हूँ। तो भाई हबीब की दिक्कत ये है कि उसका ड्रीम एम्पायर था मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर को सिंपल जाटों ने जो 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 इवन ऑल द राजपूत्स वर इन सर्विस ऑफ द मुगल एम्पायर, बट स्टिल 1669 जाट्स ऑफ ब्रज नॉर्थ वेस्ट एरिया and the backbone of the Mughal Empire was Punjab, was fully uprooted by Jat Sikhs in all and each and every territory, village, nook and corner. They were thrown out, and he has certain grudge against Jats because Jats were not they have been engaged into like the farming, but suddenly a small revolt of 1669 uprooted the full Mughal Empire in 40 years. ये तो फिर बायस्ड हिस्टोरियन हो गए ना। अगर उसको कोई ग्रज है जाटों के खिलाफ तो वो बोल के लिखे, वो नहीं लिखेगा। लिख रहा। यही तो these are back burners, because I have shared my video with you.
and the person who is interviewing now he's claiming that my own theory has been thrown back on my face, and he's saying there are certain proofs found in Gilgit Baltistan and other places and up north that there was a prince. He's not even saying that he was a king. But if you look at the area, and I showed in the earlier Rajasthan one, Shailendra Jit was a great ruler, and he ruled for longer, almost 250 years. That includes the current Rajasthan, and his capital was from Sialkot. So, if he's now, Irfan Habib is talking about that there is something great king above Gilgit Baltistan and other places. So that means how much he's hiding, and he's 90 plus. Can you believe this? I've been trying to contact them, but nobody listens, and they I don't know on what basis saying he's for example, like camel one. So camel is like the horses in different places. It's like the asset of the people out there. They are the one who really controls it. And he considered Chachnama as a historical book, which was written almost like 700. It was written in till 1213 year and reproduced by what do you call Mirza Kluchbek, almost like in 1400s, 1300s. So these are historians, and they consider this as a historical document. I try to contact the person who is the Maulvi son and the generation now, and we are trying for last so many years to see the document. Not a single thing has been produced. So they are again making mythical, man-made stories. You take your time and read Chachnama. People have given interpretations. For example, Chach is like bowing in front of Luhana. It doesn't make any sense. That's all. 4 pages interpretation out of that. लेकिन ऐसे बंदों को फिर बता देना चाहिए ना कि हम जाटों के अगेंस्ट हैं और अपने जो गुस्सा है वो निकाल रहे हैं, तो ये भाई ना नहीं बता के बताएंगे भाई, नहीं बताएंगे वो। ये एक प्रोपेगेंडा है, एंड उसमें ज्यादातर माय गेस इज द जाट्स आर आल्सो रिस्पांसिबल बिकॉज दे डोंट राइट एंड रेड कंट्रोल, and these guys at the back end slightly without asking, and they or fooling somebody, they create their own story. And here we are. You read this paper, somebody must have written it. It's not written, it is written before 1947. So whatever I am providing you, except one page which is being written by Dr. Shashi Prabha Gupta, all of them are, everything is before 1947. Not by me, not by any Jat, not by anybody else. It's all plainly written in front of you. And they are quoting Huyen Sang. Huyen Sang has never written that, hey, these are Jats. You are interpreting it as a Jat. Where he has written Jat? अच्छा, जब ये जो खत्री क्लैंस हैं, ये बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कभी कभी। अब क्योंकि जैसे आपने अभी जिक्र किया कि बहुत सारे जो ओरिजिनल नाम है उनको भी लेके वो जाट बन गए, तो ये यानी नहीं, कि यार ये खत्री डिफरेंट क्लाइंट्स है जी। जो बुक का मैंने आपको ये बुक्स ली है, ये उनके रिकॉर्ड से लिए है। ये जो ट्रेडर्स लोग हैं, जो शॉपकीपर्स हैं आज के दिन में, जो दुकानदार हैं, they are nothing to do with the Khatri clan of Jats, because for example in Haryana there are 140 villages which are ancient villages which has a last name as Khatri. Khatri means it's like Kshatriya modified, but it has nothing to do with these like the shopkeeper I'm talking about. So they created their own clan, but they have written some old records. I found it through the system, and they have clearly highlighting that, hey, the ruler of the Sindh was from the Jat clan, and his name was Sahas Rai too. So they have, Aroras have recorded it. That's what I found this one. यानी कि खत्री क्लैन जो कि जाटों का है वो डिफरेंट है, और जो खत्री जो कि कास्ट जो यूज जो करते ट्रेडर्स हैं, हैं, जो कास्ट बिजनेसमैन जो हैं, ट्रेडर्स हैं, वो डिफरेंट है। yes, but they also recorded it very nicely in their records, especially the Aroras, that hey, all the rulers of the Sindh were like from the Jat, and they were all Sahas. अच्छा, अरे भाई, ये तो एक इरफान हबीब से मैंने भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। लेकिन अजीब सी बात है कि जब भी उनसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते, और वो अपनी तरफ से ही स्टोरीज क्रिएट करके बनाते रहते हैं। मैं तो तो कहता हूँ, जाटो हाँ भाई, इतने बॉस, मैं कह रहा हूँ, लेट्स से फिजिकली अकबर ने, मुगल एम्पायर ने, एवरीबडी, दे हैव फाइट्स विद द जाट्स, क्लियरली रिटन।
all places. So definitely they're writing from their own. Definitely they will pride on themselves, just like Arab invaders did. But whatever Arab invaders recorded, every fight from Persian, like the Persia they tried to fight, they recorded the Jats, the the cavalry, the elephants, military, everything was Jats. Jezergardi third front lines managed by Jats. That is around 7th century I'm talking about. And अगर वो अगर वो Arabs have recorded that. अगर वो लिखना भी चाहते हैं हमारे अगेंस्ट तो खुल के लिखें कि ये जो है ना हम मुगल्स की फेवर करते हैं और जाटों के अगेंस्ट हैं, तो हमें भी पता चले कि क्या करना चाह रहे हैं। या तो बताएं कि जाटों के हम अगेंस्ट हैं और हम जो है ना जाट हमारे अगेंस्ट लड़े हैं पुराने वक्तों में, तो इसलिए हमें वो जो गुस्सा है हम इसके ऊपर निकालेंगे। अच्छा अजय भाई, आज के अगर सिंध की हम बात करें तो आज के सिंध की सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। सिंध और पंजाब में एक बड़ा फेमस कोट है जो हमेशा लोग कहते हैं, पॉलिटिशियंस भी कहते हैं कि ये धरती गुरुओं पीरों की है, शहीदों की है। और पर्टिकुलरली आज के दौर में जो सिंध में एक बड़े मशहूर जीएम सैयद साहब गुलाम मुर्तजा सैयद गुजरे हैं, उन्होंने एक आइडेंटिटी क्राइसिस डेवलप कर दिया, रीजनल आइडेंटिटी क्राइसिस। उन्होंने सिंधी, पूरे सिंध को सिंधी कह दिया, और पंजाब के साथ आज का जो सिंधी है, यानी जब अपने आप को आप सिंधी कहते हैं तो फिर आप सब एक बराबर ही हो जाते हैं और वो पंजाबी बन जाते हैं। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस जीएम सही ने क्यों किया? क्या यार ये तो वो पॉलिटिशियन का काम है मेरे भाई, ये तो बिकॉज उसमें ये है कि अगर वो उसको सिंध रहने देता है तो जाट आइडेंटिटी चलती रहती है, तो उसको अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए उसको जनरल मासेस तो चाहिए ना। सो वो एक जनरल कर, ये मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया पहले कि मेरा डिस्कशन हुआ था जिनेन ग्रेस से, वो आर्ग्यूमेंट यही था। सुमरा सम्मा से लेकर के जितने मैंने 1947 से पहले हिस्टोरिकल रिकॉर्ड प्रोड्यूस किए ब्रिटिश एम्पायर के, जो रियल ग्राउंड वॉर का हिस्टोरियंस का, और वो भी नॉन बायस थे। सो the argument was they're Sindhis. I'm not disputing they are Sindhis. Sindh is a geographical area. So people living in that area, everybody is a Sindhi. But they are smartly trying to dilute the dominance of Jat from historical perspective. आप क्या कहते हैं कि ये जो धरती है ये गुरुओं पीरों की और शहीदों शाहों की है, इसके बारे में आप क्या यार कहते हैं? ये कहां से आए हैं भाई? ये गुरु आज के दिन में यू रिमूव जाट्स, ये गुरु शायद तो यहाँ खड़े भी नहीं हो पाएंगे। दे विल रन अवे फ्रॉम दिस प्लेस। दे आर लाइक द टिपिकल बैगर्स ऑफ इंडिया। और भाई इट्स डिफिकल्ट, फालतू में फ्री में कुछ भी ज्ञान बांटना बहुत आसान काम है। प्रॉब्लम इज हाउ टू डू द वर्क, हाउ टू बिल्ड अप अ सिस्टम, हाउ टू प्रोटेक्ट इट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मुल्तान को बोलते हैं कि ये सैयद सूफी, अरे भाई मुल्तान तो मल्ली जाटों का बनाया हुआ है, ये सैयद सूफी कहां से आ गए? इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है टीचर की, ठीक है, टीचर टीचर रहे लेकिन वो सिर पे ना चढ़े। तो ये इनका इनका रूल कहां से आ गया, मेरे को आप बताओ, ये कहां से आ गए? और इनकी इनकी औकात क्या आज के दिन में? मैं तो उनको चैलेंज करता हूँ खुला, मैं इंडिया में चैलेंज करता हूँ इनको, तुम आए कहां से हो भाई? और तुम इतने ग्रेट थे, मैं कहता हूं जब तुम मेरे से आर्ग्यूमेंट करते हो इतने ग्रेट हो, तो यार जाके तुम अरबिया के अंदर और अफ्रीका में जाके क्यों नहीं अपना ज्ञान फैलते? और इसी तरह की थ्योरी जो जीएम सैयद ने प्रोपोगेट की है, और वो सारे और यार जो उसको उसको तो तुम पंजाब को तो हटा के उसे अपर सिंध कर लो, फिर क्या करेगा जीएम सैयद? भाई अगर अकबर के टाइम में इसको पंजाब बोल दिया, 5 रिवर है पंजाब, 5 रिवर कर दिया, इसकी इसका 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 ड्रम बीट हो गया। लेकिन इट्स रिवर्स, मेजर रिवर तो इंडस है, उसको अपर सिंध और लोअर सिंध बोल दो। आ तो वो वहीं से रहा है, तो एरिया तो लेकिन उसका वही है। हाँ तो भाई ये उसके, ये देखो वो आया कहां से है। और उसने उसने कौन कौन से जो जो जाम जमोट जाट जिनको आप कह रहे हो आज के दिन में, उनको कितनों को पागल बनाया है एक आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए। लेकिन सेम ही तो लोग हैं। अब आप खुद आपने मुझे बताया जो आपने क्लैन बताए हैं वो पंजाब में डिफरेंट वही नेम है, इधर भी वही हम्म। नेम है, बस उनमें एक लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज भी अलग हो जाती है। अब आप आपको मैंने पहले एक लैंग्वेज पे झटकी पे किया हुआ है। आप मैं आपको इंडिया का एग्जांपल देता हूँ। 3 स्टेट है जाटों की मेन, ठीक है। अ, हरियाणा हो गया, हरियाणा में कहते हैं अड़े उड़े, आने इधर और उधर जाने को। उसके रिवर के अपोजिट हो गया फिर से वेस्ट यूपी अनदर जाटलैंड, उसमें कहते हैं इंगे उंगे, मतलब इधर आ और उधर जा। तो सेम लैंग्वेज तो यही प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को।
इसी तरह और पंजाबी पंजाब में कहते पंजाब हैं और इत्थे हरियाणा ओथे। के हरियाणा के ऊपर पंजाब में आ जाओ, एथे उथे। तो समझ रहे हो मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हम्म, हूँ, ये आइडिया ये लोग जो आ रहे हैं, ये जो अपनी क्लेम ले रहे हैं कि सूफियों की धरती है, कहां से सूफी की धरती है? सूफ ने कुछ किया है वहां पे? वो यार जो खुद भीख मांग के खा रहा है वो तुम्हारे लिए क्या करते क्या? और मेरा मेरा तो वो वीडियो बहुत सही है कि अगर सैयद शाह इतने ग्रेट हैं, तो ये भैया अफगानिस्तान के अंदर रह के और अरब में क्यों नहीं जाके प्रपोर्ट करते इस्लाम को? नहीं वहां पे देखें, ये बड़ा बहुत अजीब सा डिफरेंस है। जो अरब का इस्लाम है वो बहुत डिफरेंट है, और जो हमारा सब कॉन्टिनेंट का यहाँ पे है ये बहुत डिफरेंट है। तो दोनों में बड़ा बहुत बड़ा क्यों डिफरेंस है। क्यों अंतर है भाई? किस लिए? किस लिए? इन्हीं के लिए। क्या अंतर? अंतर क्यों होगा? एक तो एक ही चीज होनी चाहिए भाई। भाई आप और मैं आज सेल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास एप्पल 12 है, तो सब जगह एप्पल 12 ही होगा ना? या वहां कुछ और उसमें वर्जन घुस जाएगा पाकिस्तान के अंदर? समझ रहे हो ना जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ? अब जैसे हरियाणवी है, हरियाणवी में हरियाणा को 50 साल में मिलकर जाटों ने बिल्ड किया। उसके सारी ग्लोरी जो है, स्पोर्ट्स से लेकर के एजुकेशन सेंटर, एवरीथिंग, वो जाट है। आज के दिन में जो नॉन जाट है, वो सारे के सारे घुस गए हैं और अपने आप को हरियाणवी क्लेम करते हैं। सो बेसिकली दे डायल्यूटेड द जाट आइडेंटिटी। यानी आपकी क्या बात कहने का मकसद ये है कि जो रीजनल आइडेंटिटीज है हमें इस पे फोकस नहीं करना चाहिए, और खास तौर पर जो भी ज्ञान बांटते हैं रीजनल आइडेंटिटीज के नाम के ऊपर वो बेवकूफ बनाते हैं। और जो हमारे ओरिजिनल ओरिजिनल क्लैंस थे, जो हमारा ओरिजिनल ट्राइब था जाट, चाहे वो सिंध में अपर में हो या लोअर में हो, वो आज भी वहीं पे हैं। उनको खुद रियलाइज करना चाहिए कि हमारी वैल्यू वर्थ कितनी है, और हमें रैशनली सोच के एक दूसरे के साथ कनेक्शंस बना के इस धरती के लिए खड़े होना है, इस धरती को उठाना है, ताकि हम यार एक अब अच्छे रिलेशंस बन हाँ, सके अब बना मैं सकें। तो हाँ, अब मैंने तुमको वो डॉक्यूमेंट भी दिया है कि विर्क है। विर्क आप हमारे पाकिस्तान में भी जाट है, पंजाब में, इधर इंडिया के पंजाब में जाट है, उधर हरियाणा में आ जाओ वो भी जाट है सारे। तो विर्क को, उसको वर्को बोल दोगे आप सिंध में, तो क्या वो कुछ बदल जाएगा? वो तो भाषा का डायलेक्ट हो गया ना। इसी बट तरह मैंने बहुत सारे क्लैंस है, खेड़ा है वहाँ पे, खोड़ो है, और जखड़ है, जाखरानी है। तो बहुत सारे ऐसे क्लैंस हैं जिनके नाम चेंज हुए हैं, एरिया वाइज चेंज हुए हैं, लेकिन वो क्लैंस के लोग वही के वही हैं। हाँ भाई, और वो लोग डिस्कनेक्ट हो गए जोग्राफिकल वाइज, और इसलिए उस क्षेत्र की एक स्मॉल लेवल पे आइडेंटिटी आ गई। बट अगर आप कनेक्ट करने लगोगे तो यू विल फाइंड इट्स एन अमेजिंग, बहुत बड़ा एरिया है, विच इज ऑलमोस्ट आई कैन से इट्स लाइक अ 3 पाकिस्तान यू कैन क्रिएट वन जाटलैंड। थैंक यू वेरी मच अजय भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने एक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू दिया सिंध के ऊपर, और मैं लास्ट में यही बात कहना चाहूंगा कि ये जो सिंध है, आज का सिंध कह लें या पुराने वक्तों का सिंध कह लें, ये आज भी वही लोग उनके मौजूद हैं। और ये जाट हैं, सारे डिफरेंट क्लैंस इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इनको रैशनली सोचना चाहिए, रैशनली काम करना चाहिए, और एक दूसरे के साथ कनेक्शन जोड़ने चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच अजय भाई, और आपके टाइम का ये बहुत कंटिन्यू शुक्रिया। हाँ, ये कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद ये जो जो ये मोहम्मद बिन कासिम को भगवान बना के रखा है इन्होंने सबने, ही आई विल प्रूव यू ही कुड स्टैंड फॉर नॉट इवन 12 or 14 18 months out there, and he was basically an agent of the the Dahir Prime Minister Siskar, who was again a Brahmin. So these two guys collaborated to attack Sindh. That is being proven. Nobody can challenge it. And I will, with the military garrison has been diluted by Siskar Brahmin in order to make this guy Muhammad bin Qasim successful. I think we'll continue on that. सो थैंक यू वेरी मच अजय भाई। All right, thank you.